मेरा नाम आमिर भगत है और I am for the last I think a couple of months I've started doing this new thing which is Instagram Reels जो viral Reels वगैरह चल रही है. So basically I've been doing Adobe Premiere editing since the last 10 or so years, and I've worked with many brands and stuff. But recently there's been a spike in the viral Reels जिस तरह का बहुत चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे. तो उसमें we started working and we found some success over it. So उसमें I will be giving you some information कि how do we make, because we have an office, of course I don't do all the work alone. We have a team of editors that I lead. So उसमें I'll tell you what tools that we use and what things that we use to make those reels. Right. So can all right. Abhi, let me share the screen so you can see the first screen. Just a second. Share screen. Let me. Just a second. All right. Yep. So, how can I know if the screen visible? Link. Hassan, can anyone tell me if the screen is visible so I can continue? Right, I'm assuming the link is visible. The screen is visible right now. Acha, so this is the reel that we did recently. Let me share it with you first. So this is the reel. अब इसमें you can see कि many much जो आपकी चीजें हैं, the graphics are moving very fastly because आजकल के social media timeline में you don't have that much time to emphasize on anything because जो आपका time span, attention span है as we speak, is very slow. So it is very low, it's around 3 to 4 seconds. Right? तो आपको पहले ही उसमें hook लेना होता है. अब यहाँ पे what we did is कि this is an AI voice over. So एक AI tool है that we use for voice over is 11 labs. अब 11 labs में फायदा ये होता है कि आप अपनी वॉइस चूज कर सकते हैं कि आपको कोई मेल चाहिए फीमेल चाहिए. रिसेंटली देयर इज अ फीचर ऑन 11 labs that you can train your voice. तो आप अपने वो आपको कुछ पैसेज देते हैं पढ़ने के लिए. अब you read them and then it just magically आपकी अगर आपको कोई और नया वॉइस ओवर करना अपनी जबान में तो आप जो टेक्स्ट लिखेंगे it will provide the voice over in your voice. So it's truly magical. I know it's AI, but it's coming after us. Be prepared. राइट. तो यहाँ पे ये हमने जो द एंटायर वॉइस ट्रैक इज एआई जनरेटेड, तो वॉइस ओवर है. ठीक है. इसके बाद अनदर थिंग दैट यू सी इज मैं एक एक करके सबको ब्रीफ करता जाऊंगा. But this software, if you don't know about the software, is Adobe Premiere. This is the latest version, Premiere 2023. अब उसमें जो सबसे अच्छा फीचर जो है ना Premiere 2023 में, that is this text feature. They have been in beta for several times, but अब वो finally इसमें आ चुका है. और ये जो आपने टेक्स्ट देख रहे हैं, I didn't write it. It's just the AI of Premiere who listen to the podcast entire thing and उसने पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है. If I go to here and see transcript, so you can see यहाँ पे पूरा जो है ना transcript लिखा हुआ है. You can even I can go to a point and it will take me to that point exactly. तो यहाँ पे आप जैसे जैसे आप वॉइस ओवर पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे इससे आप एडिट भी कर सकते हैं. अगर मैं किसी को भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा, लेट्स से इफ आई वांट टू डिलीट दिस पार्ट, बेटर प्रोटेक्ट योरसेल्फ, मैं डिलीट कर दूंगा तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा.
भी वो डिलीट इसके लिए नहीं कर पा रहा बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स लेयर टू इट, तो अब वो डिलीट नहीं करेगा। बट अगर वो सिर्फ अकेला हो यहाँ पे टेक्स्ट हो, लेट्स सी, मैं इसको यहाँ पे ये लेके जाता हूँ। अभी करंटली अपडेटिंग क्योंकि यहाँ पे नया टेक्स्ट ऐड हुआ है। Alright, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने इसको, आप जब ट्रांसक्राइब ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ऑन की हुई है, आप इस ट्रांसक्रिप्शन को एक कैप्शन बना सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि यू गो टू द ट्रांसक्रिप्ट एंड यू क्लिक दिस बटन क्रिएट कैप्शंस। ये आपको ऑप्शन पूछता है कि आपके कोई प्रीसेट्स वगैरह है या नहीं है। अभी फिलहाल मैंने कोई प्रीसेट नहीं बनाया हुआ फॉर दिस ऑप्शन। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन ये भी दे सकते हैं आप कि यहाँ पे स्टाइल कौन सा चूज करना है। यू कैन क्रिएट योर ओन स्टाइल। लेट्स से कि मैं भी ठीक है, लेट्स क्रिएट अ स्टाइल फर्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया and I went to essential graphics. Essential graphics is where you edit all those text effects, right? यहाँ पे you selected the text और आपने इसको let's say आपका कलर look at this yellow color और आपने इसका स्ट्रोक कर दिया white कि जस्ट थोड़ा ये ऑफ लग रहा है, राइट? बट ये ओ कुछ ज़्यादा हो गया। Let's do this 20 and make this dark something. Let's say blue. Alright, this looks nice. ठीक है, अब मुझे ये लगा कि ये मेरा एक प्रीसेट बन सकता है जो कि मैं आगे आके इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रैक स्टाइल में यहाँ पे क्रिएट स्टाइल किया, मैंने स्क्रॉल कर दिया ब्लू। अब ये मेरा प्रीसेट सेव हो गया ब्लू के नाम से, राइट? नाउ आई वेंट टू ट्रांसक्रिप्ट वंस अगेन, टेक्स्ट में आके क्रिएट कैप्शंस एंड देन आई फॉर्मेट में आके सॉरी स्टाइल में आई कैन सेलेक्ट ब्लू। ठीक है, मैंने सेलेक्ट ब्लू, तो उसमें ये नई जो ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा उस समय वो ब्लू, ये जो हमारा प्रीसेट हमने बनाया हुआ है दैट विल बी सिलेक्टेड, राइट? अब ये पूछ रहा है कि मिनिमल लेंथ इन कैरेक्टर्स। अब ये मिनिमल लेंथ होती है ये कितनी होनी चाहिए? आई यूजुअली कीप इट एट अराउंड 20 बिकॉज दैट क्रिएट्स रीडेबल ट्रांसक्रिप्शन, वरना वो बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ आ जाते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन इन सेकंड्स, अब एक जैसे हम बात करें जो टेक्स्ट आ रहा है तो 30 सेकंड के टेक्स्ट को ट्रांसक्राइब कर रहा है या फिर 1 सेकंड के टेक्स्ट को ट्रांसक्राइब कर रहा है। आई कीप इट अराउंड 1.5 बिकॉज वो इतना ही काफी हो जाता है। गैप बिटवीन द लाइंस इज बिटवीन द फ्रेम्स, एवरीथिंग दैट बिटवीन 1 to 5 इज गुड। क्रिएट कैप्शंस, आप देखो इसने पूरा ही अपडेट कर दिया, राइट? ये आप देख सकते हैं कि इसने पूरा हमारा कैप्शंस को इस तरह अपडेट कर दिया है। अब अगर आपको लगता है कि यार ये चीज कुछ इसमें टेक्स्ट गलत हुआ है तो व्हाट यू कैन डू इज, अब देखो यहाँ पे से दो सब टाइटल्स बना हुए, एक पुरानी लेयर है हमारी, मैं इसको ऑफ करूँ, दिस वाज द ओल्ड लेयर एंड दिस वन इज द न्यू वन, राइट? अगर मुझे कुछ चीज चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे एवन आइकन को देयर और यहाँ पे मैं ABC कुछ भी लिख सकता हूँ। सो दिस इज ऑलवेज एडिटेबल, राइट? ओके, लेट मी डू कमांड C ताकि मैं अपनी पुरानी चीज यहाँ पे चले जाऊँ। ओके, देयर यू गो। सो आई एम बैक टू दिस। Okay, one more thing I want to add. Let me stop this screen share first. So, अभी तक हमने जितना चीज पढ़ी है वो दैट इज के हाउ टू ऐड कैप्शंस। अब ये जो कैप्शन है दैट विल ओनली वर्क ऑन लेटेस्ट प्रीमियर, नंबर वन। एंड अनदर थिंग, आपकी लैंग्वेज जो है ना वो इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश है, उसमें मैंड्रियन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, उर्दू इज नॉट हियर येट। तो उर्दू के लिए आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट उर्दू, when आपको उर्दू रील होती है so there is a thing app called captions in sorry in iOS and Android devices। तो आप उसमें अपने, अगर मैं उर्दू कोई बात उर्दू में कर रहा हूँ तो वो उसको ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश कैप्शन दे देगा। जो कि आपने आजकल बहुत आपने देख रहा होगा लोग बात कर रहे हैं। तो आप, लेट मी शो यू एन एग्जांपल एज वेल, लेट मी शेयर माय स्क्रीन once again, present। all right, so let me search for caption app demo। ये देखिए जैसे ये है ना, ठीक है,
अब ये जो हमारे भाई साहब ये उर्दू में बात कर रहे हैं और ये लाइव कैप्शन ट्रांसलेट होके आपकी वीडियो में विजिबल है। तो ये जब मैंने पहली बार देखा था 4-5 महीने पहले, था वो शौक यार ये कितना एक्यूरेट है। एंड विद टाइम, क्योंकि एआई है, तो विद टाइम इट अपग्रेड्स इटसेल्फ और इट बिकम्स बेटर एंड बेटर, राइट। तो एक आपकी चीज ऑप्शन ये है आपके पास कि आप इसको इस तरह कर सकते हैं कैप्शन ऐप के थ्रू, ठीक है। नंबर टू, आप जो है उर्दू के लिए आपके पास कोई और ऑप्शन फिलहाल कैपकट वगैरह में है, लेकिन वो इतने अच्छे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, राइट। अब आप वापस आ जाए प्रीमियर पे, अगर हम जाते हैं वापस, तो हम उसमें से आगे देख सकते हैं कि उसमें आगे भी मैं व्हाट वी कैन डू। ऑलराइट, सो वी आर बैक ऑन द एडोबी प्रीमियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर, इफ यू कैन सी दिस टाइमलाइन ऑफ माइन, सो कट्स देखो तो हर 2-3 सेकंड में कट है, ये देख लें। अनदर चीज, कट कट कट, when I say cut means a new frame, right? In this sense, change, 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 ठीक है। तो अभी तक 13 सेकंड में यू ऑलरेडी सीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑलमोस्ट 11 फ्रेम्स आपको दिख चुके हैं। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि आपको जो अटेंशन स्पैन है दैट इज वेरी लेस, वेरी स्लो, राइट। तो उसको आपको ध्यान में रखकर कॉन्स्टेंटली आपको चेंज करना होता है। अब आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, जो आप इमेजेस यूज करते हो पीएनजी में होता है। अब पीएनजी बनाना बेस ऐसा ऐसा प्रोसेस, आप गूगल से इमेज डाउनलोड करो, तो देयर आर सम वेबसाइट्स जो विच विल हेल्प यू मेक इवन फास्टर पीएनजीज। उसको मैंने लिखा हुआ है कि आप पिक्चर इस्तेमाल करें गूगल से, ऑफ कोर्स। फॉर रिमूविंग बैकग्राउंड द वेबसाइट नेम इज बैकग्राउंड रिमूवर, पिक्चर सर्च बैकग्राउंड बीजी रिमूवर। बीजी रिमूवर सर्च करें अपने गूगल में और इट विल शो यू वेबसाइट, आप उसमें पिक्चर डालें और पीएनजी बना के आपको दे देगा। तो फोटोशॉप में जाके, अब तो खैर फोटोशॉप का जनरेटिव एआई भी बहुत स्ट्रांग हो गया है। आप फोटोशॉप में जाएंगे वो आपकी जो है वो पहला ऑप्शन आपको देगा कि रिमूव बैकग्राउंड। इफ यू वांट टू ट्राई, लेट्स ट्राई दैट एज वेल। लेट मी गो टू, ओके, एक सेकंड, लेट मी ओपन फोटोशॉप। Okay, so here we have Photoshop. Let me get an image. Just a second. Uh, Images.google. Let's say, what do we search? Let's say Baba Radha. Okay, the best friend in the world. ठीक है, अब मैंने ये पिक्चर उठाई और या राइट क्लिक सेव इमेज एज, और मैंने इसको अपने यहाँ पे सेव कर दिया, राइट। बाबा आजम की इमेज को आई टेक इट टू फोटोशॉप, राइट। अब देखो फोटोशॉप में खुलते ही पहले डिफॉल्ट ऑप्शन होगा रिमूव बैकग्राउंड का। मैंने रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक किया एंड देयर यू गो। अब ऑफ कोर्स कुछ चीजें उसको पता नहीं भाई ये इंसान है, मतलब इंसान का बैट है थोड़ी, तो आप उसको ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज ब्रश इट बैक। यहाँ पे यू कैन रिवर्स द बैकड्रॉप और उसको वापस ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सेव करके पीएनजी, तो दीज आर वेरी फास्ट मेथड्स ना। बट अगर आपको एक और वेबसाइट जो मैंने बताई बीजी रिमूवर, आप वहां जाएंगे तो इट्स इवन फास्टर देयर, राइट। यू सेव द पीएनजीज एंड देन यू ब्रिंग देम इन प्रीमियर। अब यहाँ पे आप देखो तो तमाम पीएनजीज है, राइट। अब व्हाट यू डू इज पीएनजी का, आप पीएनजी में क्लिक करोगे तो यहाँ पे यू कैन सी एफएक्स कंट्रोल में कि उसमें की फ्रेम्स लगी हुई हैं, ये ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। ओके, देखने में आपको बड़ा आसान लग रहा है बट दिस टेक्स टाइम, राइट। टाइम एंड प्रैक्टिस। जस्ट अ सेकंड, ऑलराइट। अब देखो ये की फ्रेम्स में यहाँ लगे हुए हैं। This, if you can see, position is changing, right? आप कोई भी इफेक्ट्स में कोई भी पिक्चर में इफेक्ट लगा सकते हैं और हर जगह यू कैन सी दिस की फ्रेम्स, कभी टॉप टू बॉटम, कोई बॉटम टॉप, राइट। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी कोई चीज लगी हुई है, तो एवरीथिंग हैज अ एनिमेशन। अब ये तमाम चीजें जो आपने लगा दी इसके ऊपर, तो अब बात आती है कि आपको फुटेजेस जो रही, तो आपने पीएनजी लगा दिया, फुटेजेस कहाँ से इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट आई डू इज आई यूज इन्वाटो एलिमेंट्स फॉर
स्टॉक फुटेजेस मैंने अपना उसका अकाउंट परचेज किया हुआ है, so ऊपर खुला हुआ भी है हमारे पास. Let me take it down. Alright. तो यहाँ पे लेट्स से कि इन दिस केस आई नीड क्रिप्टो. मैंने यहाँ पे स्टॉक वीडियो पे क्लिक किया and I search for crypto. And there you go. अब यहाँ पे क्रिप्टो के रिलेटेड तमाम जो स्टॉक फुटेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, दैट विल बी विजिबल टू मी. मैं इस पे ओवर कर सकता हूँ and I can download something. अब let's say crypto is very general. Let's type Bitcoin. आपको तो ये फुटेज बहुत अच्छी लग रही है, राइट? बिटकॉइन की. या फिर ये डायरेक्टली ग्रैस्प माय अटेंशन. मैंने यहाँ पे क्लिक किया डाउनलोड, और मैं कोई प्रोजेक्ट पे नाम क्लिक करके आई कैन ऐड एंड डाउनलोड. जो लास्ट में कि मुझे सेव का करना है, मैं इसको अपने फोल्डर में सेव करता हूँ, FTX, देन सेव, एंड दिस विल स्टार्ट डाउनलोडिंग. So we have very fast internet. That is very necessary. अगर आप कोई बाहर के clients के लिए काम कर रहे हैं, आप वगैरह के लिए काम कर रहे हैं, so you need a fast internet because आपको stock footage download करनी पड़ती है, and that has to be downloaded only on fast internet because फिर वो time बहुत आपको ले लेता है. Let's wait for 2 minutes. Is it possible to take questions during the live? If we have any questions, till we download the footages. Can you repeat the which software? Okay, can you repeat which software you use? So the software is Adobe Premiere Pro. Let me see on the stream if there are any questions. Yeah, I'm just getting a few questions on the stream. I think they were most. Yeah, so guys, if anyone has any questions on the stream watching right now, we're taking a few questions. So please feel free to drop any questions that you have. Where can I see the stream? Is it live on YouTube? Yes, it is live on YouTube. All right, yeah, there you go. I think I can. All right. Okay. So I can see the questions. That is visible. Looks great. Which software is this? Sorry for being redundant. Umema, this software is Adobe Premiere Pro. Okay, मैंने जवाब दे दिया. What is a good website to search for stock video? असद अमजद का सवाल है. So for the stock video, what I use in Envato because उसमें मुझे सिर्फ stock footage नहीं मिलती. I'll show you after this कि इसमें सिर्फ stock footages नहीं है. इसमें आपके पास graphics element भी है. इसमें आपके पास stock photos है. आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स के टेम्पलेट्स पड़े, आपके म्यूजिक पड़ी है, आपके पास साउंड इफेक्ट्स पड़े हुए हैं. तो देयर आर प्लेंटी दैट यू कैन. एक सब्सक्रिप्शन आई थिंक $30 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है इसकी, अराउंड $9,000 to $8,000 sorry रुपीस पर मंथ है. यू कैन ऑफ कोर्स यूज दिस कार्ड टू, क्योंकि इसमें आप आराम से डॉलर में पे कर सकते हैं. और उसका थ्रू फायदा ये होता है कि आपको जो एक ही जगह पे आपको यू गेट एवरीथिंग इन Envato. इसके अलावा यू कैन यूज स्टोरी ब्लॉक्स वगैरह. स्टोरी ब्लॉक इज क्वाइट एक्सपेंसिव बट डिपेंडिंग ऑन योर रेंज, राइट? Envato पर फ्री है, बिल्कुल फ्री है Envato पे once you pay for it. So Envato is paid unfortunately, but pixels are good. Yeah, thank you. Upon pixels are another which is good. That's correct. What elements would you say are essential in helping make a reel go viral? Okay, so to एक तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज द फर्स्ट हुक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट गो वायरल. उसमें अक्सर मैं टिकटॉक में देखता हूँ कि डोंट डू दिस, और फिर आपको हुक कर लेते हैं कि क्या नहीं करना है, और यू से कि यू हैव बीन डूइंग ऑल दिस थिंग रॉन्ग इन योर लाइफ. हम क्या भाई क्या कर लिया जिंदगी मैंने खराब इस तरह. तो व्हेन यू सी टिकटॉक तो वो आपको जो पहले 3 सेकंड में हुक होता है ना, दैट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग टू गो वायरल. कि आपको पहले 3-4 सेकंड हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. एनी अदर क्वेश्चंस or we can go back to the editing? Yeah, guys, so one thing that I want to point out is that this YouTube stream is actually going to be running on a 15-second delay. So if you guys have any questions, yeah, please keep adding those in. We'll keep answering them as we go on through the session. Yeah. Let's take a 5 minutes
wait for the questions, and then we can continue back in Adobe Premiere. What Yes. elements would you use? Okay. Also, why do you think Reels and Short have become so popular? Okay, the reason short because now we are TikTok, not I, बच्चे जो है they are TikTok generation. तो उसमें ये हो गया कि आपके attention spans में इतने कम हो गए कि वो you need maximum information in minimum time. You need an answer in 15 seconds or less. अब आज के ज़माने में if even I want to search for a food recipe, so I won't go to YouTube. I will just write on TikTok कि ये खाना let's say what chicken tikka, how to make chicken tikka at home. You search on TikTok, आपके पास हज़ारों ऑप्शंस आ जाएंगे क्या this is the new Google basically. तो आपको visually दिखा देंगे भाई कि how do you make this at home or how do you do anything at uh, on a TikTok. So you need something very quick. Even आजकल जो है टिकटॉक पे काफ़ी चीज़ें अच्छी वो जो वायरल चली जा रही है रिस्टोरेशन वीडियोस। तो व्हाट यू सी के लोग महीने-महीने जो काम करते हैं वो आपको 1 मिनट में दिखा देते हैं कि किसी ने अपना स्विमिंग पूल रिवाइव किया है, रिस्टोर किया है, किसी ने अपनी बाइक रिस्टोर की है। आई डोंट नो इफ एल्गोरिथम इज शोइंग मी ओनली बट जो आपके शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन इफेक्ट देता है। आपने अक्सर अपना आप को भी ऑब्जर्व किया होगा, मैं कभी-कभी इस ट्रैप में आ जाता हूँ कि आपको 2 बजे कुछ नींद नहीं आ रही, तो जस्ट स्टार्ट योर टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील और आप जस्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। कभी क्रिकेट की वीडियो आ रही है, कभी कोई खाने की वीडियो आ रही है, कभी कोई ग्लास जो है वो स्टेयरकेस से नीचे फेंक रहा है उसकी वीडियो आ रही है। तो दैट इज हाउ वी आर ब्रेन राइट नाउ। हाउ हार्ड इज इट टू क्रिएट रील्स हैविंग अ लॉट ऑफ मोशन ग्राफिक्स? यार पहले मुझे भी लगता था कि बहुत मुश्किल है रील बनाना ऑन with lot of motion graphics because I used to be an animator on After Effects. But recently Premiere have made up so many effects और इतने सारे presets, animation composer is one of them. I will show you how to use that. वो आपको इतना आसान कर दिया उसने एनिमेशन ऑन प्रीमियर, तो अभी इतना मुश्किल नहीं लगता unless you go for entire 2D animation or 3D animation. So for that you need to use other softwares like After Effects or 4D Cinema 4D, बट अभी प्रीमियर में ही काफी चीजें आसानी से हो जाती हैं। Alright, next question. Right, guys, if you have any questions, please feel free to keep on adding them, and हम लोग answer करते रहेंगे. बाकी, Amir, if you want to move forward, we can also do that, and let's people. Alright, perfect. Let's move forward then. Okay, I'm gonna share my screen और फिर मैं आपको बताऊंगी आजकल जो नए effects जो आ रहे हैं या नई जो gigs आती हैं Upwork में Fiverr में किस तरह की आ रही है and how do you make them. Share screen. Let me show my entire screen. Okay. So दो effects अगर आप Upwork में भी search करेंगे, let's go on Upwork. और यहाँ पर अगर आप लिखे Alex Hormozi, I think I'm spelling him right. Yeah. हाँ, spelling. अब देखो यहाँ पे वीडियो एडिटर लॉन्ग टर्म Alex Hormozi लाइफस्टाइल वीडियोस, Alex Hormozi, Alex Hormozi. अब लोग बकायदा नाम में जो है ना ये लिख रहे हैं और जिस तरह क्योंकि क्लाइंट के डिमांड में नाम में Alex Hormozi है, तो काफी ऐसे अपवर्क में एडिटर्स हैं जिन्होंने अपने नाम में ही, अब देखो ये पाकिस्तान से किसी ने पोस्ट किया कि उसको एडिटर चाहिए Alex Hormozi स्टाइल का, राइट? तो Alex Hormozi स्टाइल है क्या? Sorry. So if we go to just YouTube and we search Alex Hormozi style reels, so Alex Hormozi is of course a person YouTuber जिसने ये चीज को बड़ा वायरल किया हुआ है इस effect को. This is a very common effect. Okay. See, so what इसमें ये होता है कि what it does is it creates emphasis on the word that is being said along with the emojis and color use. And therefore, how much I should allocate. This is the action word. How much I should allocate. और क्योंकि it's a question to emojis like क्योंकि आज की जनरेशन ना वो इमोजी से काफी कनेक्ट कर पाती है. So this is Alex Hormozi style because अगर मैं अपनी बात करूं तो we are visual people, right? तो we really जब कुछ चीज सामने आती है ना तो there is an urge to read something. आप अगर वो सुन भी रहे होंगे तो आप फिर भी आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, तो that creates double impact आपकी विजुअल और आपकी जो है
हियरिंग पावर दोनों यूज हो रही थी रील देखने में, दैट क्रिएट्स एन एक्सपीरियंस फॉर ऑडियंस एज वेल। तो ये एलेक्स हर्मोज की स्टाइल है। इट्स वेरी क्वाइट सिंपल, बट चूंकि सिंपल है दैट इज वाई एस वी से लेस इज मोर, राइट। और यूट्यूब में यू कैन फाइंड हजारों ट्यूटोरियल लाइक दिस, how to edit these Alex Hormozi TikTok in Premiere Pro, captions like Alex Hormozi। ये देखें, I had ये हाउ टू कैपकट में भी आ गया भाई, मोबाइल से बना सकते हैं। एक ये स्टाइल बहुत पॉपुलर है, और एक और स्टाइल है, लेट्स सर्च ऑन अपवर्क एज वेल ऑन द सेम स्टाइल, अली अब्दाल। ओके, क्रिएट वीडियोस लाइक अली अब्दाल, शॉर्ट फॉर्म एडिटर अली अब्दाल स्टाइल, अली अब्दाल स्टाइल, हर जगह पे आपको डिस्क्रिप्शन में अली अब्दाल वगैरह मिल जाएंगे। अब व्हाट इज अली अब्दाल स्टाइल, वो भी देख लेते हैं। सो ये है अली अब्दाल का स्टाइल। सो बिफोर वी गो फॉरवर्ड, अली अब्दाल स्टाइल नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, तो इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज दिस इज विजुअली वेरी अपीलिंग, राइट। नाउ हैव अ लुक एंड देन वी डिस्कस इट अगेन। राइट, ठीक है। तो एक इफेक्ट समझाया है इसने, रेडियो इफेक्ट विद द एनिमेशन। तो व्हाट इट डज इज, अगर आप देखें विजुअली इट्स वेरी graphically appealing, because आपको जो चीज बताई जा रही है, you're not just seeing the speaker himself, but you're also seeing a story being told। जैसा कि हम बचपन में अपनी कहानी की किताब पढ़ते थे, in those story books there used to be illustration, तो यहाँ भी वो illustration है, enhancing the storytelling effect, right। तो अब इसमें ये होता है कि what you do is कि इसमें जैसे ये presenter ये अब्दुल himself है, by the way he is from Karachi, आपको खैर वो यूके में रहते हैं, लेकिन motivation for all of us। ऑलराइट, सो इसमें क्या होता है कि आप कैन कट आउट द सब्जेक्ट। मैं ये करता हूँ, व्हेन आई यूज्ड टू फर्स्ट स्टार्ट डूइंग दिस लाइक दिस वीडियोस, तो हम ये वीडियो को लेके जाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। देयर इज अ टूल कॉल्ड रोटो ब्रश। रोटो ब्रश टूल से ये होता है कि आप पूरे वीडियो को आराम से आप उसको ग्राफिकली आप उसको अलग कर सकते हैं फ्रॉम द बैकग्राउंड, राइट। पहले रोटोस्कोपिंग हो रही थी बहुत पहले, और अब ये इफेक्ट कैपकट में भी आ गया है, कॉल्ड ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट। आप उससे भी काम कर सकते हो। तो आपको क्या होगा कि लेट्स से कि this is मेरे को मतलब तो ये डेटा में, ओके, दिस इज यू एंड दिस इज द बैकड्रॉप, राइट। तो अभी आपका आफ्टर इफेक्ट्स क्या करेगा, आप रोटो ब्रश में जाओगे, तो दिस विल कट आउट योर यू फ्रॉम द बैकग्राउंड, दिस विल सेपरेट यू फ्रॉम द बैकग्राउंड, और आप इसके बीच में यू कैन इंसर्ट समथिंग एल्स, समथिंग लाइक दिस। आप इसके बीच में कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, राइट। अब अगर यहाँ पे मैं वापस प्ले बैक करूँ, अब आपका बैकड्रॉप, ये जो बैकड्रॉप है इसकी जगह आपकी ये चीज पूरी रिप्लेस हो गई है, राइट। और ये जो आपका लीफ दाल है, ये जो आप है वो खुद नीचे हो गए। तो दिस इज कॉल्ड अली अब्दाल वीडियोस, राइट। अब इसको क्रिएट करने का आपको सबसे मेहनत वाला काम होता है ना, दैट इज कटिंग आउट हिमसेल्फ, और जो सब्जेक्ट दैट यू आर वर्किंग फॉर उसको आपने कट आउट किया, और उसके बाद आपने पीछे जाके एनिमेशन है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब इसमें भी बिकॉज ये जो अगर मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा दैट दैट विल टेक आवर्स, तो अगर मैं यहाँ पे भी सिर्फ ये लिखूंगा ना अली अब्दाल टाइप रील्स, अगर मैं यहाँ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल हाउ टू मेक शॉर्ट लाइक अली अब्दाल, तो यहाँ भी आपको हजार ट्यूटोरियल्स आराम से मिल जाएंगे कि हाउ डू यू मेक दोस, राइट। अब देखो जैसे ये एक शॉर्ट देखें आप, ये देखें, ओके, इस तरह की वीडियोस है, मैंने अक्सर टिकटॉक में इसको फॉलो भी किया हुआ है। व्हाट इट डज, इट टीचेस मी कि आप किस तरह को, ये प्रीमियर की टाइमलाइन है कि आप कहाँ कहाँ कौन कौन सा इफेक्ट यूज कर रहे हैं।
अब यहाँ पे देखो, मुझे पता है कि इसके ऊपर एक ग्राफिक कैप्शन है जो कि ये रहा, राइट। अब यहाँ पे 4-5 लेयर्स आएंगे आगे आगे। 1 2 3 4, दीज आर द लेयर्स जो आने वाली थी आगे। अब यहाँ पे कुछ और आने वाला, आगे 3 चीजें। एक, ठीक है, अभी आप पीछे के मैं यहाँ नहीं जा सकता, बट एक हेड तो उसके अंदर gears थे, तो there you can exactly see what's going to happen and how it's going to happen. ऑल्सो इसमें एक और चीज ये हो रही है कि यहाँ पे अगर आप बिफोर में देखें तो कैमरा स्टेबल एक जगह फिक्स हुआ, ट्राइपॉड में हुआ, बट इफ यू गो टू द अदर स्क्रीन जो कि आफ्टर है, उसमें आपका कैमरा जूम इन जूम आउट हो रहा है, बिकॉज वो आपको विजुअली ना रेस्ट नहीं दे रहा। देयर इज ऑलवेज समथिंग हैपनिंग। अगर आपको कोई ग्राफिक्स नहीं तो कैन ऑलवेज जूम इन जूम आउट, ये भी चीज आपकी काफी इफेक्ट पड़ती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ फ्रॉम वन ऑफ माय क्लाइंट्स, जिसपे हमने, इसने कहा था कि मुझे, सॉरी, मुझे जो है ना वो इफेक्ट चाहिए, बट मुझे अपने ही शक्ल को थोड़ा जूम इन जूम आउट करना है। So what we did for him was, let me show it to you. Okay. Okay, one more thing कि हमेशा have your portfolio ready with you। अब जैसे मेरे पास एक गूगल ड्राइव पर या पोर्टफोलियो सारे पड़े हैं, मतलब अगर मेरे को पॉडकास्ट का काम किया हुआ है या हमने कोई रील्स का काम किया हुआ है, तो मैं रेडी रखता हूँ पोर्टफोलियो अपना। जहाँ से किसी का मुझे काम आ गया, लेट्स से यूज जनरेट कंटेंट है, इसका मुझे काम आ गया, तो आई कैन ऑलवेज क्लिक शेयर एंड देन सेंड द लिंक फॉरन ही फॉरन। तो जो जो मैं नया काम करते रहता हूँ, मैं अगर वो किसी इन चीज़ों में गिरता है तो मैं फॉरन इसमें डाल देता हूँ। अच्छा, वन मोर थिंग आई जस्ट सॉ माय अपवर्क प्रोमो, आई शो यू माय अपवर्क प्रोमो एज वेल, कि वो मैंने किस तरह बनाया एंड हाउ इट्स गेटिंग मी क्लाइंट एवरी डे। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे अपवर्क क्लाइंट में जाता हूँ। अपवर्क क्लाइंट में देख सकते हो क्लाइंट कॉल काइल काइल काइल, काइल रेंडर्स, या। अच्छा, दिस इज विजुअली नॉट दैट मच अपीलिंग, बट दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स नीड। उसने कहा यार मुझे सिर्फ जूम इन जूम आउट चाहिए, बिकॉज फॉर हिज ऑडियंस दैट इज अपीलिंग, राइट। सो यू नेवर नो what suits for your client। अब जहाँ जहाँ एम्फोसिस हो रहा है वहाँ पे वी हैव कलर्ड द फुटेज, कलर्ड द टेक्स्ट, सॉरी। ऑलराइट, सो ये एक तरह की सिर्फ जूम इन जूम आउट की रिक्वायरमेंट है। बट एट द अदर एंड इफ यू सी, एक और क्लाइंट है हमारा, उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट थी। अब इफ यू सी ब्रियाना डियाज, इसकी जो रेंडर्स अगर आप देखोगे, तो जो भी आपने इंस्टा देखा वो उस तरह की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट है। अब आई विल जस्ट शो यू केस हियर इन लेगन पॉल। ये तमाम प्रीमियर में क्या हुआ, ठीक है। इसके अलावा इफ आई डू शो यू समथिंग एल्स एज वेल, इसमें ओके लेट्स सी दिस रेंडर्स। अब इसमें what we used to do, roto brushing, roto brush tool in After Effects, and then bring it back on Premiere and do the editing. If you can hear the audio, see हर जगह पे हमने एक साउंड इफेक्ट डाला हुआ है ताकि आपको विजुअली प्लस ऑडिबली ना आपको वो आवाज सुनाई दे, राइट। So this is what we did for different clients. अब इसमें while we are here, so one of the tips for you is to always keep everything on Google Drive,
बिकॉज आपको नहीं पता कि आपका कौन सा काम किसी और क्लाइंट को आपको दिखाना पड़े। तो मैंने इस तरह सब कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हुई ताकि मेरा कुछ भी काम हो, एक तो मैंने क्लाइंट वाइज रखा हुआ है नंबर वन, दूसरा मैंने पोर्टफोलियो का अलग मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। उससे ये होता है कि चीज़ें जो है मैं आराम से देख सकता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ था, कैश काउ चैनल्स। अब कैश काउ की अलग ही एनिमेशन चल रही होती है, बट लेट मी गो बैक टू द पोर्टफोलियो एंड लेट मी शो यू वन एक्सपेरिमेंट दैट आई डिड, जो कि मुझे लगा कि अच्छा हो सकता था, बट स्टिल वी वेंट फॉर द एक्सपेरिमेंट। अगर मैं आपको दिखाऊं रील्स में, या आमिर क्रिकेट। अब ये एक अलग तरीके हमने कोशिश की थी बनाने की, ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ स्टफ दैट यू कैन ऑलवेज। अच्छा, ये तमाम चीजें प्रीमियर में हुई, द ओनली थिंग दैट वी डिड आफ्टर इफेक्ट वाज टू क्रॉप आउट द बैकग्राउंड। बाकी वो तमाम चीजें प्रीमियर में ही हुई हुई हैं, राइट। So let me switch to Google once again and let's see if we are having any questions there. Okay. How hard is it to create? Okay, ये हो गया SadaSchool. Seems like your message was study to YouTube guidelines. Just a second, let me take it down. Yeah. What process do you generally follow when editing a video? Or the process is very simple for me. प्रोसेस ये होता है कि व्हाट वी डू इज फर्स्ट वी गेट द स्क्रिप्ट फ्रॉम क्लाइंट। अगर उसकी वॉइस ओवर नहीं करना है तो वॉइस ओवर मिल जाता है, बट इफ यू हैव टू डू वॉइस ओवर तो व्हाट वी डू इज वी जस्ट फर्स्ट गेट द वॉइस ओवर फाइनलाइज। तो उसमें ये होता है कि यू नीड टू गेट द ड्यूरेशन एंड स्टफ राइट फॉर एवरी वर्ड दैट इज को एम्फेसिस कहाँ करना है क्या नहीं करना है। सो दैट फॉर दैट यू नीड क्लाइंट अप्रूवल। वंस दैट इज डन, सो व्हाट वी डू इज के वी फाइंड आउट द स्टॉक फुटेजेस, या इसमें स्टॉक फुटेजेस कहाँ से कहाँ कहाँ डालनी है। देन वी गो टू द ग्राफिक्स। ग्राफिक्स करने के बाद हम ये करते हैं कि उसमें चीज़ों को तीन चीज बनाना शुरू करते हैं, एंड देन music and everything comes after that. Some creators editor tend to use a certain style while creating their videos. My question is, does having a consistency style help in improving the reach of your assets? Reach for your assets. My question is, does having a consistent style? Yes, it does. So in Pakistan, I love the style of Bhai Log Talha. He has this amazing style, और वो स्टाइल जो है ना तलहा का विद टाइम डेवलप होते जा रहा है। तो व्हाट वी डू इज, अगर हम जैसे हम देखते हैं कि आईफोन, इफ यू सी एन आईफोन, तो दिस इज आईफोन 12 राइट। तो आईफोन 11 के बाद ये शेप आपका कंसिस्टेंट शेप ही दिख रहा है, आपको आज तक यही शेप दिख रहा होगा इसमें। बट उसमें हो ये रहा है कि आप इंक्रीमेंटल चेंजेस करते जा रहे हो। थोड़ा आपने कभी इस बार जो आईफोन है उसके एजेस थोड़े से राउंड और हो गए कि इट्स बेटर टू होल्ड। तो आप इंक्रीमेंटल थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते जाते हैं to make the product better for the long term. तो इसमें रीजन में ये होता है कि if you are making a style for yourself or for your client, so you keep improving one thing at a time. तो अगर आप देखोगे पहली वीडियो का स्टाइल है, तो with the fifth video you will not see any change, but if you're seeing the 20th video, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको चीजें पॉलिश होने शुरू हो जाएंगी। तो what I do is I keep experimenting with the client, of course with their permission। उससे ये होता है कि आपकी चीजें और बेहतर होने और देखने शुरू हो जाती हैं। So that is your answer for that. Any more questions do we have now? We don't have any more questions in the chat, but I guess I do have some questions from my end, Aamir bhai, if I can. Can you Yeah, tell sure. us can you tell us a bit about from the client's perspective that if you onboard a new client and they want you to hire you for long term, how many videos per week do you expect, or what is like the average frequency that clients are expecting from freelancers? Yeah. So the clients that we have, they depends in कि आपको पर्सनल डील्स बना रहे हैं, आप अपने किसी खुद के ब्रांड के लिए बना रहे हैं। So the maximum that someone wanted us from for them was 3 videos a week. तो उसमें भी जो the FTX standard that we are doing, उसके लिए हम क्लाइंट के लिए 3 वीडियो वीक प्रोड्यूस कर रहे हैं, which makes 12 videos a month. तो वो होता है। कुछ क्लाइंट हमारे ऐसे भी थे जून जुलाई में, जो कि ईच वीडियो अ डे, या आई थिंक दैट वाज फ्रॉम कनाडा क्लाइंट हु वांटेड अ वीडियो डेली। तो उसके लिए व्हाट वी डिड, द फर्स्ट वीडियो टुक 7 आवर्स, द फर्स्ट वीडियो, एंड आहिस्ते आहिस्ते वी फाउंड आउट अ बेटर वे टू डू इट, और वो अब it's now around 2 hours per day for that video. But since usme what we do is while you're scaling up,
So you need people to help you guys ताकि आप उसको scale up कर सकें. अभी if you can see in the backdrop, we have 3 genius creators sitting right here. ये यहाँ तक ठीक है. So what we do is कि हमने एक स्टाइल बना लिया एंड देन वी रेप्लिकेट दो स्टाइल्स बिकॉज एक स्टाइल बनाना मुश्किल होता है, रेप्लिकेट करना उसको थोड़ा बेहतर होता है, आसान हो जाता है. So that is how I do my stuff here right now. Any more questions? Awesome. I guess I would just like to build up on that and sort of ask that from a macro point of view. Of course, a lot of people joining this stream are also trying to learn these skills for their own selves. So, from a macro point of view, what are your comments on like strategies that this one client that you had who wanted to post one video a day? How successful do you think that was, or what would your recommendation for people to like the frequency of videos that they should be posting? Alright, so जो client हमारे पास daily videos बना रहा है, what they are doing is because they are building their personal brand. तो उसके लिए उसको डेली वीडियोस चाहिए और उसको डेली कुछ ना कुछ ऑडियंस, क्योंकि ही इज डूइंग अ ट्विटर थ्रेड, तो उसमें उसको डेली कुछ ना कुछ एक, क्योंकि आपको पता है आज के ज़माने में रोज़ नए एआई टूल आ रहा है, राइट? तो उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि वो रोज़ कोई ना कोई नया एआई टूल लाता है, उस रिकॉर्ड अ स्क्रिप्ट एंड सिंस ही इज इन कनाडा, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो रात को सोते हुए वीडियो भेज देता है अपनी, उसकी जब रात होती है तो मेरी होती है सुबह सुबह 9 बजे. मैं आता हूँ ऑफिस में, काम करता हूँ 12 के, उसको वीडियो दे देता हूँ, वो उठता है मेरे शाम को 6 बजे. तो इस तरह जो है ना हमारा टाइमलाइन बहुत अच्छी तरह मैच हो जाता है. तो हमारा टाइम का फायदा ये बड़ा अच्छा है कि हम एकदम बीच में दुनिया के. तो मेरे क्लाइंट्स दे आर रेंजिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू यूके टू कनाडा. तो अभी अभी ऑलमोस्ट जैसे मेरे अभी अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकूँ तो मेरे पास सामने 4 सिटीज हैं, मेलबर्न, एडमिंटन, लंदन और न्यूयॉर्क. तो मेरे मेजर क्लाइंट्स यहाँ से, तो मैं उन सबको मैच ऑलमोस्ट टाइम मेरा मैच हो जाता है एंड दैट क्रिएट्स अ बेटर हार्मोनी फॉर द क्लाइंट इन मी. Very nice, very nice. I guess another thing that our viewers are very interested in is how do you get that virality factor? And like, does one reel getting viral, is there like an element of luck involved? Is it purely design? Um, if you could share your thoughts on that. ओके, मुझे लगता है कि वायरलिटी जो है ना आज, बिकॉज यू कैन नेवर गेस द एल्गोरिथम. इट्स ऑल अबाउट कि अगर आपको एक हुक अच्छा लग जाता है तो पीपल आपको फॉर मिल जाता है, बट यू हैव टू कीप दैट स्टाइल गोइंग. जैसे अब ये होता है कि लोग अली अब्दाल की रील का वेट करते हैं या नहीं, इस रील में उसने क्या नई चीज ट्राई की होगी. सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग डिफरेंट राइट नाउ. जितना आप डिफरेंट होते हैं उतनी ही देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग more audience or more virality, or it's all about snowball effect. शुरू में अगर आप कोई नई चीज ट्राई करेंगे तो बिकॉज इट वोंट बी रीचिंग दैट मच पीपल, इट माइट बी रीचिंग 10 people, बट इफ यू कीप डूइंग दैट स्टाइल, जैसे आजकल एक और नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक बंदा है वहाब शायद नाम है, वो जो हर जगह चीज लेने के 3.5 किलोमीटर ट्रैवल करता है. तो या फिर अपना एक और है उस्मान, मिडिल क्लास उस्मान रफीक, उसने नई चीज ट्राई की थी कि वो कोई नया नया बिजनेस कर रहा है. The first it was hard to reach audience, but once you reach those audience, so those audience started sharing your webcam. तो उसमें ही होता है कि then it's a snowball effect कि आपने एक को दिखाया फिर एक ने 5 को दिखाया, तो that is how you get the virality. So I guess consistency like this is key in It is, growing. of course, because what a platform needs from you is, because it's just like ऑडियंस को प्लेटफॉर्म पे रखना भी और एक काम होता है. अगर ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम यूज करेंगे और आपकी वैसे लोग इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स इंस्टाग्राम वाला रिवॉर्ड यू एज वेल, बिकॉज वो आपकी चीजें और दिखाएगा. ऐसा वाला बहुत डोपामिन. आपको मुझे लगता है कि मेरे वीडियो में 1000 व्यूज आए तो अगली में 1200 आने चाहिए, फिर 1400 आने चाहिए. तो यू कीप वर्किंग फॉर द एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम ऑल्सो पेज यू वेल. अगर आपकी वो चीज शेयरेबल है, लेट्स से कि आई थिंक रिसेंटली वी डिड रमजान कैंपेन विद इरफान, जिसमें हमने वी डिड फूड रील्स. आई डोंट नो अगर आपने देखी नहीं देखी है, तो उसमें ये हुआ था कि वी वर पोस्टिंग दिस ऑलमोस्ट डेली इन रमजान. तो हमारी हर रील को ऑलमोस्ट मोर देन 1000-2000 शेयर्स मिल रहे थे. तो उससे फायदा ये हो रहा था कि हमारे फॉलोअर्स अचानक से बढ़ने शुरू हो गए. वी वर स्टक एट अराउंड 6000-7000 फॉलोअर्स. अभी वी आर अराउंड 900,000 सॉरी 600,000 से वी आर 900,000. तो उससे फायदा ये हुआ है कि when people share or comment, so of course and every platform needs that what should I say कि interaction चाहिए होती है. कि अगर आपको कोई बंदा कमेंट कर रहा है, आपको कोई बंदा शेयर कर रहा है, which means people are liking your content, which means कि it's gonna show to more people. तो more people जिन्होंने अगर आपसे interact किया हुआ है, तो उसी के जो आपके look alikes हैं ऑडियंस है, उसको वो और दिखाएगा. तो that is how the algorithm rewards you.
Awesome. Also, we do have another question in the chat. I'll also Yeah, pin it to the stream. You can take a look at it. So, one last thing. How do you charge your clients? Okay, this is the question. How you charge your client? yes, is it based on the number of videos you deliver or the time you spend working? So I guess it's more of a client negotiation question. Yeah, so abhi जो है ना, since I'm just starting on Upwork, I think it's been just two months probably. हाँ मैंने अगस्त में शुरू किया था, almost 2 months. So it depends. अभी तो I'm just taking anything that I can get. बट उसमें भी आप व्हाट यू कैन डू इज कि बिकॉज मैंने काफी काम शुरू करके बीच में रोके बिकॉज मुझे लगा था इसमें काम ज्यादा लग इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं और पे आउट कम है. So right now for these type of reel I charge around $30 to $45 US dollars. अगर मुझे लगता है कि यार काम ज्यादा है और क्वांटिटी भी ज्यादा है तो आई कैन गो फॉर द कि भाई मैं इसको $20 पर डील में भी काम कर सकता हूँ अगर इफ दे प्रोवाइड मी अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज ऑफ कोर्स एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आपको स्टेबल होता है कि चलो ठीक है आपको हर महीने आपको इतने 500 या $600 आ रहे हैं तो यू कैन कीप द व्हील मूविंग. बट अगर वो एक एक या दो काम है तो आपको फिर आई गो फॉर हायर चार्ज ताकि वो मेरा जो है एफर्ट ज्यादा लगाता हूँ मैं और आई गेट फॉर गो फॉर अ हायर चार्ज. और अगर फिर वो अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे आया था तो ऑफ कोर्स मैं आपको ये कहता हूँ मेरी एक स्टैंडर्ड लाइन है कि यार there's a difference between retail price and wholesale price. So what you want to go for, retail or wholesale? So if they go for wholesale rate तो फिर मैं कहता हूँ you gonna buy the bulk deal. Like आप महीने के मुझसे जो है 12 डील ले लो या 15 या 16 डील ले लो तो I can go for the lower charge. But if you need 4 to 5 deals a month, then I'm gonna go for a higher charge. That is the way I negotiate with my clients. आपकी आवाज नहीं आ रही है. Oh, sorry. Yes, I was saying let's wait for a follow-up question from Hamza if he has any. Yeah. Also for if we here तो मैं एक चीज बताता हूँ Upwork के लिए what I because I started just using Upwork in August. So there's an app called Up Alerts by a Pakistani YouTuber को शजील अहमद. तो उन्होंने Up Alerts की ऐप इतनी अच्छी बना दी है कि what you do is कि I don't go for on Upwork to search job. मैंने उस ऐप में डाल दिया है कि भाई मुझे एडिटिंग की जॉब की जो है ना रिक्वायरमेंट्स है. तो व्हाट्स गोना डू इज कि इट्स गोना गिव मी नोटिफिकेशन कि जब भी कोई कीवर्ड की वो जॉब पोस्ट होगी तो दिस इज द ऐप. इफ यू कुड सी आई कैन गो हियर जॉब्स में एंड आई कैन सी कि मेरी कौन सी जॉब आ रही है यहाँ पे. तो एवरी टाइम इज गोना न्यू जॉब तो मुझे नोटिफिकेशन अप्लाई करता है कि भाई ये अब लेट्स से कि मुझे ये जॉब अच्छी लग रही है. अब मैंने यहाँ पे जॉब डिटेल्स देखी मुझे लग रहा है कि यार ओके दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू. सो आई कैन जस्ट राइट एन एआई प्रपोजल. यहाँ पे क्लिक तो यहाँ पे मुझे एआई प्रपोजल बना देगा. ऑफ कोर्स इट नीड्स क्रेडिट, आई नीड टू बाय समथिंग बट दिस इज अ वंडरफुल ऐप. इट राइट्स एन एआई प्रपोजल फॉर मी. मैं अपने जैसे यहाँ पे लिखता हूँ राइट एआई प्रपोजल. तो मैंने आपको जो शुरू में पोर्टफोलियो दिखाया था अपने कि मैंने तमाम चीजें गूगल ड्राइव पे आई कैन सेलेक्ट कि मुझे पोर्टफोलियो किसका भेजना है. मुझे जो है पॉडकास्ट का वेट करना है, वेडिंग पोर्टफोलियो देखना है कि सॉरी पॉडकास्ट का देखना है, वेडिंग पोर्टफोलियो देखना है, किसका देखना है. आई कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द पोर्टफोलियो एंड जनरेट एन एआई कवर लेटर. तो उससे फायदा ये होता है कि मैं यहीं से अपने मोबाइल से बैठ कर आई कैन जनरेट एआई कवर लेटर और देन आई कैन सेंड इट अक्रॉस टू द क्लाइंट. तो ये बड़ा काम मेरा आसानी से काम हो जाता है इसमें. And Aamir Bhagat also loops back in with how you said that it's very important to organize your drive file. You can या definitely get some मांग लेता है. बिकॉज उससे मेरा ड्राइव इस्तेमाल बिकॉज आई हैव माय वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस इन लास्ट 10 years. तो मैंने ये देखा है कि आपको रिमोट होना बहुत जरूरी है. यू नेवर नो कि कौन सी नेक्स्ट चीज कहाँ से आ जाए. तो दैट इज द रीजन वी ऑल शेयर, जो हमारे एडिटर्स हैं और मैं भी शेयर गूगल ड्राइव. उससे फायदा ये होता है कि वी डू एवरीथिंग ऑन ड्राइव. अगर कोई लेट्स से समवन डजंट शो अप ऑन अ डे and if you need to work, I have my laptop, so I can always go to my laptop and do the changes. Because यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है because you are working for an audience. उनको नहीं समझ में आता कि आपके यहाँ पर लाइट नहीं है या आपको इंटरनेट नहीं है. तो फॉर दैट रीजन यू नीड टू बी वेरी रिमोट और आपका तमाम काम ऑनलाइन है. अल्लाह ना करे आपकी लाइट की ऐसे आपकी हार्ड ड्राइव फुल जाती है. जस्ट वेरी कॉमन रीजन होता है. मेरे साथ भी पिछले हफ्ते में एक हार्ड ड्राइव आई थिंक इट वाज 6 TB हार्ड ड्राइव which just went boom. So you need to have a backup. So it that is why I always suggest कि यार Google Drive is very cheap. I think around 400-500 per महीना. Just buy that storage and keep everything on that storage. I absolutely agree. I think a lot of new designers sort of need to understand the value of organizing their work and especially creating backups, Yeah, especially that's very. large video projects. So that's a great tip for new joiners. But we do have a question in the chat again from us, and I'm going to pin it
How do you keep up to date with trending? Do you rely on what you see on your news feed? Yeah, I am a very avid user of TikTok. तो मैं पिछले टिकटॉक से 1 डेढ़ साल से यूज कर रहा हूँ। मजे की बात अब ये हो गई है कि मैंने ये किया कि टिकटॉक फीड को इस तरह क्यूरेट कर दिया कि मुझे नया कंटेंट नहीं दिखता है। सो व्हाट यू डू इज के यू आल्सो व्हेन एल्गोरिथम इज ट्रेनिंग यू कैन आल्सो ट्रेन योर एल्गोरिथम। होता ये है कि आप जो चीज साथ इंटरेक्ट करते हो आपको ज्यादा दिखाता है। अगर मैं आपको भी अपना टिकटॉक दिखा दूं तो उसमें ज्यादातर आपको इंग्लिश कंटेंट दिखेगा। फायदा ये होता है कि मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई पाकिस्तानी कंटेंट या ऐसा कंटेंट जिससे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेट्स से डांस वीडियोस वगैरह पाकिस्तान में काफी कॉमन है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो व्हाट आई डू आई क्लिक नॉट इंटरेस्टेड। फिर कोई भी ऐसी चीज मुझे दिखती है जिसमें लगता है यार मुझे इंटरेस्ट है, आई जस्ट फॉलो दैट पर्सन रैंडमली। तो अब उससे फायदा ये होता है कि आई जस्ट गेट न्यू वर्क। लेट्स ट्राई दिस लाइफ। आई होप इट वर्क्स फॉर नाउ बेस्ट वे। लेट मी ओपन टिकटॉक एंड सी के व्हाट माय फीड शोज मी। ओके, यहाँ पे पहले तो लिमिट आ गई मेरी। No worries, Aamir bhai. So this is a live demonstration. We're very lucky Okay, that so our yeah. Okay, so this is another Gora content. ठीक है, ये अपने बिल्ली के बारे में बताता रहता है। Okay, let me switch to 4G. Yeah. अब ये दराज का कंटेंट ये पाके दिया अच्छा लगता है मुझे, बंदा जो है टीचिंग का आई लाइक, तो मैंने इसको फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अब ये टैग की वीडियो बना रहा है, अब मुझे लगा ये मुझे और देखना है, तो आई जस्ट क्लिक फॉलो हिम। अब मैंने इसको फॉलो कर दिया, मुझे इस तरह की वीडियोस और आएंगी। ठीक है, अगेन गोरा कंटेंट नॉट पाकिस्तानी वीडियो। ये तो ऐड आ गया, इसको तो इग्नोर करते हैं हम। देख रहे हैं, ये तो गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड। अब ये देख रहे हैं, अभी तक कोई पाकिस्तानी या फिर ऐसे लोकल डांस कंटेंट नहीं आया है। क्रिकेट का पता है, मुझे शौक ही शौक है। ऑफ कोर्स यू कैन सी क्रिकेट ऑल ओवर हियर। ये बाबर आजम, हियर इज बाबर आजम। तो that cannot be ignored. Again a गोरा कंटेंट। So that is how you create your feed. तो आपको जो है ना, आपको फिर ट्रेंडिंग कंटेंट बहुत जल्दी दिख जाता है, because that is what you have trained your feed as well. और एक और चीज मैं एक और टिप मैं आपको देता हूँ। So I am also much into cooking. I have a cooking channel as well. तो मैंने एक इंस्टाग्राम की खुद की प्रोफाइल बनाई है कुकिंग के लिए, और जब भी मुझे कोई कुकिंग के आइडिया चाहिए होते तो आई गो टू इंस्टाग्राम एंड आई स्विच दैट फीड। लेट मी ओपन इंस्टाग्राम एज वेल। या ओके, सॉरी, इसमें भी लिमिट लगी। So अब क्योंकि मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, यहाँ पे यू विल सी वेरी मच क्रिकेट कंटेंट, क्योंकि मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। आज का तो वर्ल्ड कप भी चल रहा है। अब आई गो टू दिस देसी गाय कुक्स, जो कि मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। अब ऑन द एक्सप्लोर पेज यू विल सी कि सब कुकिंग की बात हो रही होगी, राइट? तो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज फॉर न्यू कमर्स, आप जो है अपनी एक नई इंस्टाग्राम आईडी बनाओ जिसमें आपसे वीडियो एडिटिंग या एनीथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, लाइक ग्राफिक डिजाइन वगैरह, वो उसको उन लोगों को फॉलो करो। उससे ये होगा कि आपको सिर्फ उन्हीं का कंटेंट दिखना शुरू हो जाएगा, और जो ट्रेंडिंग होगा आपके सामने फौरन आ जाएगा। तो जस्ट स्पेंड 15-30 मिनट्स व्हाइल यू आर ड्राइविंग बैक होम या फिर घर में फारिग बैठे हुए हैं, तो यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू द फीड। और अगर मुझे दिखता है मुझे कोई आज की कोई नई रेसिपी ट्राई करनी है, तो आई कैन जस्ट गो थ्रू दिस, लेट्स से मुझे यार ये अच्छा लग रहा है मुझे, तो आई कैन सी दिस। तो नीचे हमको यहाँ भी खाना होगा, यहाँ भी खाना होगा, यहाँ भी खाना होगा। तो यू कैन ट्रेन योर फीड लाइक दिस। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो ऐसा ही कंटेंट दिखता है, नहीं, आप अपनी प्रोफाइल को चेंज भी कर सकते हैं। So this is what I do for this to get trending content. I think that's a very great tip. I think TikTok थोड़ा सा बदनाम तो हो गया है, but of course it's accessible to everyone. I mean, like it gives everyone a platform, so we should appreciate it about that. But I think you've given very good tips on how like आप अपने feed को train कर सकते हो, that it gives you. And I give the live demo. मैंने कोई क्रिएट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट खोल के आपके सामने दिखाया कि this is how you train your feed, और यही हुआ आपके सामने। और this TikTok curation took me a year, कि मैं 1 साल तक जो भी मुझे आ रहा था, मैं click not interested, not interested, and that is when it started showing me the other content, जो कि उसको लगा ये तो देख लेगा बंदा, कम से कम ये तो देख ले, because algorithm को भी आपका attention चाहिए ना यार। अगर आप बार बार स्किप करते रहोगे तो वो बोलेगा ये बंदा तो मेरी ऐप पे आ नहीं रहा, तो it will also try as hard as it can to stop you from scrolling and just stick to your one of those content. So that is why वो आपको कुछ ना कुछ दिखा के आपका attention grab करने की बिल्कुल कोशिश करेगा। Yeah. Well, we do have another question in the chat from Ryan. Yeah. Put it on the screen. How to find clients if you're a beginner, like you have the skill but you are just starting to sell your skills. Okay, so
या इसका मैंने एक सवाल स्किप कर दिया था, सॉरी, मेरे पास जो था कि आपकी स्टोरी जो होनी चाहिए ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो व्हाट आई डिड कि मुझे ना बड़ा शौक है फालतू में ना लोगों के सामने वो करने का, स्टैंड अप करने का। तो व्हाट आई डिड कि मैंने अपनी एडिटिंग की और स्टैंड अप के स्किल्स को ज़रा मर्ज किया और मैंने जो है एक स्टोरी इस तरह बनाई जिसमें एक तरह का स्टैंड अप भी हो। तो उसमें मैं आपको अपनी स्टोरी दिखाता हूँ। तो काफ़ी क्लाइंट्स जो है ना सर्च करते हैं ना तो वो स्टोरीज़ देख के बोलते हैं यार कि वी आर जस्ट हियर बिकॉज़ वी लाइक योर स्टाइल। ओके, लेट मी सर्च फॉर दैट। Alright, एक सेकंड। नो, नो, नॉट इन मैसेजेस। Okay, where do we go? I'm still new to this profile, sorry. I'm still new to this upper thing. Yeah. So yeah. एक so sorry, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं होगी। I'm so sorry. Share screen, present, share screen, entire screen. Yeah, perfect. So right now you can see my screen, right? So this is my profile. एक क्लाइंट ने मुझे खराब रिव्यू दिया तो मेरे जॉब सक्सेस को नीचे गिर गया। बट लेट्स सी, दिस इज माय, इफ यू कैन हियर माय स्टोरी तो आप देखेंगे। अब इसका टाइटल ये डोंट टेल एनीवन। अब ये किसी स्टोरी लो भाई। अब मैंने ऑलरेडी 4 सेकंड में अपने 5-6 फैक्ट्स दिखा दिए। एक जगह दिखा दिया कि भाई कैमरा चलाना मुझे आता है, ठीक है? दूसरी बात मैंने दिखा दी मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है। फिर मैंने अपने आप को बैकग्राउंड फोरग्राउंड से अलग किया और मैंने पीछे टेक्स्ट डाल दिया। लाइटिंग अच्छी हुई है, तो वहाँ से मैंने इसका थोड़ा-सा टेंशन गायब करने की कोशिश की है। अब देखो इसमें वो फास्ट-फास्ट चीज़ों कैप्शंस हुआ हुआ है। अभी तक मैंने अपना कोई भी काम नहीं दिखाया है। मैंने दिखाया कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। मैं सिर्फ़ ये शक्ल दिखा रहा हूँ अभी तक। अब इसमें मैंने क्या किया कि मैंने पेन पॉइंट्स आपके क्लाइंट से क्या होते हैं, वो डेडलाइन बेस्ड नहीं होनी चाहिए, उनको काम अच्छा दिखना चाहिए, तो मैंने सब भी बोलने शुरू कर दी और अभी तक मैंने अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाया है। अब फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा स्टैंड अप कॉमेडी डाल दी और यहाँ पे मैंने थोड़ा जोक डालने की कोशिश की है। एंड देन मेरी जो है 1 मिनट 22 सेकंड में मेरी स्टोरी लाई है कि भाई मैंने अब तक क्या काम करा हुआ है। उससे एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो गई भाई, क्योंकि क्या जब भी आप ऑनलाइन काम करते हो, तो आपका काम तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ आपको अवेलेबल होना चाहिए क्लाइंट के लिए, आपको मीटिंग करना आना चाहिए, आपको किस तरह लोगों से बात करना है, बात करते हैं दैट इज़ व्हाट इज़ आल्सो रिक्वायरमेंट, राइट? तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसा हो कि क्लाइंट बोले कि मैं इससे बात कर सकता हूँ और आई कैन शो यू सम इफ कि भाई मुझे क्लाइंट ने मैसेज किए मैं इस तरह के कि आई लव योर स्टोरीज़ वगैरह। ओके, लेट्स सी। जेरेमी, या ये मेरी कल रात की बात हुई थी इससे। ये देखें, आई एम ग्रेट, हाउ आर यू, थैंक्स फॉर द डिटेल्ड रिस्पॉन्स, आई लाइक योर यूट्यूब वीडियो, एक्साइटेड टू वर्क विद यू। दिस इज द क्लाइंट फीडबैक, राइट? इसके अलावा जॉन, इसने भी मुझे जवाब दिया था इसी तरह का। सो ये फीडबैक आया उसका। क्या हो गया, कितनी कितनी बातें करता हूँ मैं। Yeah. Hi, Amir. Thank you for your application. I selected your video because your sample video made me laugh. Have a good sense of humor. That's it. तो ओह सॉरी, ओह सॉरी, मैंने अपनी स्क्रीन रुकी हुई है। बताया तो, लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैं शो ऑफ करे जा रहा हूँ, स्क्रीन नहीं दिख रही किसी को मेरी। ऑलराइट, Oh, सो no worries, please, दिस इज please. द जॉन, ये जॉन की हमारे बात करने क्लाइंट की। So ये देखें, हाय आमिर, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, आई सेलेक्टेड यू बिकॉज योर सैंपल वीडियो मेड मी लाफ, यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, दैट्स इट। ठीक है, दैट इज हाउ द कन्वर्सेशन गॉट स्टार्टेड। अब कल रात को ये स्टार्ट हुआ कन्वर्सेशन, कल रात को ये क्लाइंट आया जर्मी ली का। ओके, हाय आई एम ग्रेट, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स, आई लाइक योर यूट्यूब वीडियो, एक्साइटेड टू वर्क विद यू। अब इस तरह के बस मुझे याद नहीं है, 2-3 लोग और भी होंगे जिन्होंने मुझे से अपनी वीडियो देख के कहा गया तुम्हारी वीडियो अच्छी है, सो यू आर गुड फिट फॉर दिस।
तो अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है शुरुआत में, तो आप अपनी एटलीस्ट स्टोरी पे मेहनत कर सकते हैं। स्टोरी का फ़ायदा ये होता है कि आप यू कैन शो योर स्किल्स। योर स्टोरी कैन आल्सो बी योर पोर्टफोलियो। जस्ट मुझे अभी एक और स्टोरी बनानी, शूट करनी है, इन व्हिच मैं थोड़ी ग्रीन स्क्रीन करके दिखा दूँ कि मैं ग्रीन स्क्रीन कर सकता हूँ, या फिर आई कैन जस्ट से कि इफ यू आर हियर नॉट टू सी मी बट द स्टोरी, हियर इज़ द टाइम यू कैन गो टू दिस टाइम एंड सी द स्टोरी। तो काफ़ी फी तो जस्ट कीप इम्प्रूविंग योर स्टोरी, दैट इज़ योर परफेक्ट पोर्टफोलियो। बिल्कुल आमिर भाई, आई थिंक आपकी वीडियो देख के आई थिंक it is a big lesson for everyone that you can put your creativity on the forefront और आप अपनी creativity से ही आप lead करो. It just doesn't show your skills, but it also shows that you're willing to think outside of the box. So I think that's a great example for anyone watching. Yes. Yeah. So do we have any other questions? This is my project manager. She manages every project for our client. Also one more thing कि अगर आप कोई Upwork के client के लिए काम कर रहे हैं, if you have a team, तो अभी तो शुरुआत में नहीं होगी, बट अगर आपके पास टीम है, तो सबसे पहले you should hire a quality controls. Because as an editor what you do is कि आप हमेशा edit में घुसे होते हैं, राइट? तो समटाइम आपकी कुछ चीजें skip हो जाती हैं। लेट्स से कि आपके कोई एक कॉमा मिस्टेक हो गया कि आवाज नहीं आ रही, बिकॉज आप हमेशा तो इंडल्ज होते हैं कि you skip things. इट्स वेरी नेचुरल, बिकॉज आप 10 घंटे तक घुसे हुए होते हैं, तो आपको कभी कभी आप चीजें skip हो जाती हैं। दैट इज वेयर यू नीड अ फ्रेश आई। So by hiring someone, even outsourcing someone, कि यार अपने यार दोस्त को दिखा दो या घर वालों को किसी को दिखा दो कि वीडियो देख लो, कुछ में गलत दिख रहा है, तो sometime a fresh eye helps you a lot, because उसमें छोटी छोटी मिस्टेक ना आप कभी स्किप कर देते हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई चीज हो गई, तो उससे फायदा ये होता है कि आप उसको बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हो, एंड देन इट एलिमिनेट द चांसेस ऑफ स्पेलिंग एरर और ऑल दो स्टफ। तो या आई थिंक दैट यू शुड डू। Yeah, I guess a follow-up question to that would be, and this is probably for more experienced freelancers, is when is the point where they should start bringing in a manager, or they should start bringing in someone who's taking most of your day-to-day quality controls or your project Okay, management tasks? so yeah, so that's a very good question. आई थिंक द बेस्ट टाइम फॉर दैट इज कि आप रिपीटेटिव, आपका जब काम रिपीटेटिव होने शुरू हो जाए ना, कि यार आपको ये, जैसे मैंने शुरू में रील बनाई, जैसे मैंने 3-4 रील बनाई, अब वो काम रिपीटेटिव हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि अगर अगर इफ आई कैन गेट द मिनिमम सैलरी आउट ऑफ द बजट जब मुझे क्लाइंट दे रहा है, तो अगर एक बंदे की सैलरी निकल रही है ना अलॉन्ग विद योर एक्सपेंसेस, तो गो फॉर दैट। उससे ये होगा कि आपका जो टाइम है वो 5-6 घंटे दिन के वो बच के आप कहीं और क्लाइंट ला सकते हो। तो दैट शुड बी योर फर्स्ट हायर, कि आप अपनी फर्स्ट हायरिंग तब करें जब आप यू आर सैटिस्फाइड कि भाई ये काम जो है ना मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ, और ये काम रिपीटेटिव है। ये काम में क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, तो आप उसको रिपीटेटिव करने से खुद करने से अच्छा है कि आप उसकी और आउटसोर्स करें, और फिर आप उसको खुद क्वालिटी मैनेज करें, कि आप देखें फ्रेश है से कि यार अच्छा इसमें ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। बिकॉज़ देयर इज़ अ सेइंग कॉल्ड कि जंगल की आँख को जंगल के बाहर से देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी आग लगी हुई है। सो यू नीड टू स्टेप बैक एंड सी द एडिट विदाउट बीइंग एडिटर, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि भाई ये चीज़ किस तरह और बेटर हो सकती है। Awesome, 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 awesome. I guess one more question that I would have would be that after you kept the story likhai, right? That was very creative, it was very out there. But a lot of people who are actually good editors, or they're pretty good with the skill set that they have, but they're very they either have this doubt or they have this fear that sourcing clients is something that is beyond them. So how did you like get into the mindset of getting into the confidence that yes, you can get more and more clients? And what would you advise people who are actually good at their skill but have this fear कि यार मुझे कभी clients नहीं मिलेंगे, या एक client अभी चलेगा तो अगला कब आएगा? ओके, सो यार honestly I still have that fear. मैं आज भी दिन के 5 या 6 अपवर्क की प्रपोजल भेजता रहता हूँ कि यार कोई ना कोई क्लाइंट नया लग जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स हु डजंट नीड मोर वर्क, बट द कॉन्फिडेंस ये होता है कि रिजेक्शन से आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है कि यार अगर ये क्लाइंट ने मुझे रिजेक्ट किया है, तो मैं देखता हूँ कि रिजेक्ट क्यों किया होगा। अगर रिजेक्ट लेट्स से कि मेरे पोर्टफोलियो अच्छा नहीं, तो मैं पोर्टफोलियो थोड़ी इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ, बट इट हैज़ टू बी सेड कि यार इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट। और मेरी फाइवर की प्रोफाइल इज सिंस 2014। ओके हाँ, 2014, टुडे इज 2023, 9 years। आई हैव गॉट जीरो वर्क इन फाइवर। मैं आज तक कोई फाइवर की गिग नहीं मिली मुझे। तो आई गॉट लकी विद अपवर्क, बट व्हाट आई डिड, क्योंकि फाइवर में आई कुडंट मेक एनी स्टोरीज एंड स्टफ, तो यहाँ पे आई मेरे एक मेंटोर भी हैं, शजील अहमद और हारून, जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत अपवर्क का सिखाया, बिकॉज आई यूज्ड टू नो अबाउट अपवर्क
कोर्स बहुत सालों से Upwork है, और I started just this आई थिंक जुलाई अगस्त में, या स्टार्टेड जुलाई अगस्त, और उसमें ये हुआ कि मुझे फिर जो है जैसे कवर लेटर बहुत ज़रूरी है Upwork में, तो मैंने ये एआई की ऐप है अप अलर्ट्स जो मैंने आपको दिखाई थी, आई स्टार्ट यूजिंग दिस, तो आई डोंट राइट माय कवर लेटर्स नाउ। मैंने स्टोरीज बनाई हुई हैं, मैंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आई जस्ट सेलेक्ट द एआई, जनरेट एआई प्रपोजल, वो मेरे लिए एआई प्रपोजल लिखता है, और वो मैं अपने उसमें जो है पोर्टफोलियो अटैच करता हूँ, मैं डायरेक्ट क्लाइंट को भेज देता हूँ। तो उससे ये होता है कि एक प्रोफेशनल कवर लेटर मिल जाता है, और फिर आई ऑलवेज ट्राई टू गेट अ मीटिंग फर्स्ट विद द क्लाइंट, जूम मीटिंग अगर हो जाती तो बहुत अच्छी बात ये हो जाती है कि देन अ क्लाइंट हैज अ फेस टू टॉक टू, तो उसको थोड़ा सा ना बिलीवेबिलिटी हो जाती है कि भाई ये बंदा कोई रोबोट नहीं है, ये बंदा है जो कि रियल बंदा है, तो उससे थोड़ी बहुत आपकी क्रेडिबिलिटी टेस्ट हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज सिंस Upwork, तो आई एम न्यू विद Upwork, बट आई हैव बीन इन दिस फील्ड, दिस वीडियो प्रोडक्शन फील्ड, सिंस द लास्ट आई थिंक 2008 आई स्टार्टेड, आई डोंट नो how कितने 12-13 साल तो हो ही गए होंगे। तो उसमें से आई हैव मेट मेनी पीपल, I have met CEOs, I have met many executive people. So it taught me how to talk to people as well. So of course, शुरू में तो आपको rejections मिलती हैं, you feel scared talking to new people, but it gets better when you give time to it. Up, you're on mute. You're on mute. You're on mute. You're on mute. Right. Right. Thanks. Anyway, I was saying that we are a bit over time here, but we do have one last question in the chat. Yeah. And maybe we can close with that. Basically, I'm a graphic designer, currently level 2 on Fiverr. I want to expand a business and hire people to work, video editors with experience. Can you please provide me tips on managing? यार मैनेजिंग की टिप्स ये होती है कि अगर आपको खुद वीडियो एडिटिंग का इतना मालूम नहीं है, तो यू नीड टू हायर समवन हु यू ट्रस्ट, बिकॉज दे कैन इजीली मेक अ फूल आउट ऑफ यू। अब बिकॉज आई नो वीडियो एडिटिंग, तो आई कैन हायर वीडियो एडिटर्स, और अगर उनको कोई मसला होता है तो आई कैन हेल्प देम कि यार इसको यूं कर लो, बिकॉज व्हेन यू हैव एन एक्सपीरियंस इन सर्टेन फील्ड एंड देन यू हायर समवन ऑन द सेम फील्ड, तो यू कैन ऑलवेज टेल देम कि देखो ये मसला होगा तो आप इसको यूं सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बट इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, तो फर्स्ट आई वुड प्रेफर टू गेट द एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत एक आध महीने अपने आप को वीडियो एडिटिंग में ट्रेन करो, सो कि यू कैन हैव एन आइडिया कि किस तरह से मसले आ सकते हैं, एंड देन यू शुड हायर। जैसे अगर आपकी ये बात है, तो अभी आई एम ट्राइंग टू गेट ग्राफिक डिजाइन पोर्टफोलियो ऑन बोर्ड, ताकि मैं ग्राफिक डिजाइन की गिग्स पकड़ना शुरू कर दूं। आई हैव डन ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर आई थिंक 1 or 2 years, वो भी यूनिवर्सिटी के टाइम पे, बट आई हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ फोटोशॉप, आई हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ इलस्ट्रेटर। तो उससे फायदा ये होगा कि मुझे थोड़ा सा बहुत काम को मैनेज करने में आसानी हो सकती है विद फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। तो अगर आप इफ यू आर ट्राइंग टू हायर अ ग्राफिक सॉरी अ वीडियो एडिटर, तो यू शुड नो वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत, ताकि आप उससे बात कर सकें, एंड देन यू कैन डिस्कस द प्रॉब्लम्स, and then you can start hiring those people. I hope that answers the question. या मैंने और मुश्किल खड़ी नहीं कर दी हो? By the way, this is my Babar Azam bat. Just showing. Is that signed by Babar Azam actually? Yeah, that's fine by Babar Azam actually. That is Babi Azam 56. That is awesome. That is awesome. I have also got his badge stickers, actual badge stickers. So yeah. That's a very cool memorabilia that आपने बताया हमें भाई हमें. But I think yes, I think it was a very nice session, and I think that's all for questions. Aamir bhai, if you have any closing notes, any closing points जो आप हमारे viewers को बताना. एक चीज तो मैं इतना पुराना नहीं हूँ इन दिस अपवर्क फील्ड एंड स्टफ, या फिर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। आई एम प्रॉब्ली यंगेस्ट जो देख रहे होंगे, बिकॉज आई एम जस्ट 2 to 3 months old, बट आई एम वेरी मच ओल्ड इनटू दिस वीडियो एडिटिंग फील्ड। एक चीज जो मैंने सीखी है, दैट इज कि यू कैन नेवर बीट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास किसी और फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो यू कैन ऑलवेज स्विच टू दिस, बिकॉज दैट्स जस्ट, अगर आपको स्किल लर्निंग में इंटरेस्टेड है, तो ऑल यू नीड ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज जस्ट हाउ टू सेल स्किल, दैट्स इट। आपके पास एक ऑलरेडी स्किल तो है, आपको वीडियो एडिटिंग स्किल है, ग्राफिक डिजाइन स्किल्स है, या फिर आपको डेवलपमेंट स्किल्स है। what you need to work on is how to communicate, how to make better cover letters, और आजकल तो उसके लिए भी AI टूल है। you don't have to be that much good। पहले तो 2-3 साल पहले तो people had to actually make write cover letters and stuff। अभी तो मैं तो मतलब पता नहीं, I should say this, but मैं तो वॉशरूम में बैठ के cover letters भेज रहा होता हूँ, तो it's just AI। I like something, I select write AI proposal, मेरे पोर्टफोलियो, मेरे रील का पोर्टफोलियो क्लिक करो, अप्लाई ऑन अपवर्क्स,
copy paste send. It just take 2 to 3 minutes. What I do is कि फिर मुझे पता है कि अगर मीटिंग पढ़ने आ जाएगा तो then I have to be there. But other than that, I think you just need to have a good skill on what you do. और आपको then you have also one more thing. ये चीज मैंने बहुत अच्छी ऑब्जर्व की कि अगर पेमेंट ऑन टाइम है तो फिर डिलीवर यू शुड ऑल्सो डिलीवर ऑन टाइम. तो पंक्चुअलिटी जो है ना, जो हमारे यहाँ पे आसपास लोगों में नहीं है, दैट नीड्स टू बी डेवलप. मतलब if if there is no punctuality, अच्छी बात अपवर की है कि it punishes you as well. With bad rating and stuff, it punishes you as well. So yeah, so I think skill, you should start learning some skill and then just, I don't know मैंने क्या जवाब दिया, but मैंने बहुत सी बात एक साथ combine करके बोल दी. No, no, that is all very informative, all very informative. Thank you, Zephyr, in the comments for showing some love. Yes, that is it for today's session. If you guys liked it, if you guys want to keep up to date with more freelancing tips and sessions with more freelancing experts, please do follow our pages on socials and do join our Discord community if you want to get in touch with more freelancers. All right, thank you. It was a pleasure. And You're welcome. we get another chance to do this as well. All right. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you, guys. See you all in the next one.